तो दोस्तों हमारे पास ये भी है स्विफ्ट डिज़ायर, और कस्टमर का कहना था कि इनका रेडिएटर का पानी जो भी था, जैसे वो पानी डाल रहे रेडिएटर पूरा खाली हो रहा था। ठीक है, जैसे हमने चेक करा तो इसकी वाटर बॉडी टूटी हुई थी और जो उसका बेरिंग है वो भी टूटा हुआ था पूरा। आज हमारे पास एक डिज़ायर आई है और हम इसकी वाटर बॉडी रिफ्रेश करना सिखाते हैं। अब आप रिप्लेस एक ही बात है। तो आइए देखते हैं वाटर बॉडी कहाँ है तो बताओ। वाटर बॉडी इस फाउंडेशन के नीचे है। ये फाउंडेशन खुलेगा, उसके बाद वाटर बॉडी आपको डालने में 6 घंटे पड़ी। आपने इसमें कितनी चाल है, किस तरीके से टूटी हुई है। इसमें काफ़ी चाल हिल रही है। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अपनी नई वाटर बॉडी तो ओरिजिनल है ये। और तो ये डिज़ायर की 2010 मॉडल है अपनी गाड़ी डिज़ायर, और इसमें अपनी ये बिल डालने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। और इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो ये अपने को आपको मार्केट में आराम से 2100 या फिर 2500, ठीक है, 2500-2100 के बीच में आपको मिल जाएगी। ये वाली 2500 रुपये की एक और आती है, इससे थोड़ी सी हल्की, वो अपने 2100 रुपये की पड़ती है।
see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before. तो ठीक है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप गाड़ी को, ना इसमें किसी तरीके की आवाज़ आ रही है, ना इसको चलने में कोई दिक्कत हो रही है, ना इसका टेम्परेचर हाई हो रहा है। ठीक है, गाड़ी अब एकदम कंप्लीट है। अभी हम ट्रायल लेने जा रहे हैं इसलिए गाड़ी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।